So today's topic is pediatric stroke. In pediatric stroke, we are going to read in following headings. Number 1, arterial ischemic stroke. Number 2, cerebral sinovenous thrombosis. 3, spinal cord lesions associated with vascular process. 4, hemorrhagic stroke. 5, differential diagnosis of stroke like events. So this about 4 pages. Let us start. First point is perinatal stroke is the leading cause of hemiparetic cerebral palsy. Perinatal stroke is the leading cause of hemiparetic cerebral palsy. Acute stroke is a neurologic emergency. Delayed treatment worsens outcome. Chapter 1, arterial ischemic stroke. अच्छा ब्रेन रे दी प्रकार आर्टरी सप्लाई करछन्ते गोटे होचे एंटीरियर सर्कुलेशन पोस्टीरियर सर्कुलेशन. एंटीरियर सर्कुलेशन इज बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कुलेशन बाय vertebral basilar circulation. The most often the middle cerebral artery is involved in pediatric stroke, and AIS, arterial ischemic stroke, is focal brain infarction that results from occlusion of these arteries. In more than 50% of AIS, the initial CT scan is normal. So, in a child, acute onset focal neurologic deficit is stroke until proven otherwise. The most common focal presentation may be hemiparesis, but acute visual, speech, sensory balance deficits also occur. If any new onset seizure, especially focal seizures, they herald stroke in children. Initially AIS CT scan will be normal. तो initially हम CT scan identify करछे in order to exclude the hemorrhage, and initially तुम जदि MRI करिवो then you can identify early and small infarct. गोटे स्पेशल MRI अच्छे तार हूँ diffusion weighted MRI. It demonstrate AIS from minutes to 7 days following the onset. MR angiography that will confirm vascular occlusion. Diffusion weighted MRI also demonstrate Wallerian degeneration in descending corticospinal tract, which correlates with chronic hemiparesis. 50% of children with AIS are healthy before the stroke onset. The etiologically it can be classified in 3 major categories like arteriopathy, cardiac disease, or hematologic disease. Arteriopathy is seen in more than 50% of children with AIS. So one most common arteriopathy is unilateral irregular stenosis of proximal middle cerebral artery and neighboring arteries with associated basal ganglia infarction. This is known as transient cerebral arteriopathy.
post varicella angiopathy, non progressive childhood primary angiitis of CNS, and focal cerebral arteriopathy. So transient cerebral arteriopathy गोटे focal inflammation जो हुए, focal inflammation. At the time of diagnosis, it may be indistinguishable from intracranial dissection or early moyamoya disease. ट्रांजिएंट सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी ठीक ऑपोजिट होची डिफ्यूज बायलैटरल प्रोग्रेसिव वास्कुलाइटिस. इट इज अ रेयर कंडीशन. ट्रांजिएंट सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी इज a common condition, and the diffuse bilateral progressive vasculitis, which is a rare condition, it may be a primary angiitis of CNS or can be associated with systemic vasculitis. So CNS infections like bacterial or TB meningitis produce infectious arthritis or and thrombophlebitis of the surface vessels. नेक्स्ट होची मोया डिसीज. मोया डिसीज रे कौन हुए ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिस्टल पार्ट ऑक्लूजन हुए एंड इट दिस ऑक्लूजन इज अ प्रोग्रेसिव ऑक्लूजन. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिस्टल पार्ट रे ऑक्लूजन विच इज एन प्रोग्रेसिव ऑक्लूजन. इट मे बी इडियोपैथिक मोया डिसीज और एसोसिएटेड विथ अदर कंडीशंस टोल्ड एज मोया सिंड्रोम like sickle cell anemia, neurofibromatosis type 1, trisomy 21, Williams syndrome, Alagille syndrome, chromosomal microdeletions following irradiation. Next arteriopathy is congenital or genetic disorders of craniocervical arteries. Congenital genetic disorders of craniocervical arteries include fasces, posterior fossa abnormality, hemangioma, arterial, cardiac, eye and sternal abnormalities. CADASIL, cerebral autosomal dominant arteriopathy, subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Fasces and CADASIL, two congenital things. These are the two congenital arteriopathies. Question: what are the genetic mutations that are associated with AIS? Number 1, ACT-A2, COL41A and ADA2. These mutations are associated with AIS. Some conditions causes vasospasm which causes AIS like migraine, subarachnoid hemorrhage and reversible cerebral vasoconstriction syndrome, sometimes called Karl-Fleming syndrome. Summary. आर्टेरियोपैथी समरी रे नंबर 1 होची ट्रांजिएंट सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी which is a focal entity which is non progressive and which involves the proximal part of middle cerebral artery. Okay. अच्छा, another entity is post varicella angiopathy. Another cause of arteriopathy is systemic or secondary vasculitis like Takayasu arteritis. Next is moya disease or moya syndrome. In moya disease or syndrome, there occurs distal part of internal carotid artery is progressively obstructed. Progressive occlusion occurs. Moya syndrome or moya disease. Idiopathic disease associated with other clinical features, we call it moya syndrome. Fibromuscular dysplasia is another cause of arteriopathy. Vasospasm in reversal cerebral vasoconstriction syndrome like Karl-Fleming syndrome. Vasospasm in migraine or subarachnoid hemorrhage are also causes of arteriopathy. Congenital genetic arteriopathies like Fasces syndrome, Alagille syndrome, CADASIL. And mutations in ACT-A2, COL4A1, COL4A2 and ADA2. The next heading is cardioembolic stroke that leading to AIS. Cardioembolic stroke makes up to 25% of childhood AIS cases. Arterial करथिला 50%, cardioembolic करिवो 25%. मैक्सिमल रिस्क होची जो टाइम तुम किसी हार्ट रे इनवाजिव प्रोसेस करा लाइक कैथेटराइजेशन, सर्जिकल रिपेयर, वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइसेस, ये सब रे अधिक एम्बोलिज्म होबार चांसेस अछि.
अच्छा किसी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस लाइक कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस एएस करती और किसी एक्वायर्ड डिजीजेस लाइक आरिथमिया कार्डियोमायोपैथी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी एआईएस करती। नेक्स्ट पॉइंट होची paradoxical embolus. Paradoxical embolus is seen in cases of patent foramen ovale. The foramen ovale patent थाए the venous embolism thromboembolism it crosses the foramen ovale and directly goes to the brain causing AIS. तो कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक को तुम रूल आउट करने तुम कौन कौन कर कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन कर ईसीजी कर इको कर पीटी कर एंड इन्फेक्शन करने तुम नेक्स्ट हेडिंग होची द हिमाटोलॉजी डिजॉर्डर्स लीडिंग टू एआईएस। द हिमाटोलॉजी डिजॉर्डर लीडिंग टू एआईएस रे मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट पॉइंट होची सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया in which the risk of stroke is increased 400 folds. सिकल सेल एनीमिया रे 400 fold increase होवार चांसेस अछि। Better screening methods like using transcranial Doppler and transfusion therapy have reduced the incidence of AIS in sickle cell anemia. Iron deficiency anemia also increase the risk of AIS and is easily treatable. Next होची coagulation disorders that are associated with a childhood AIS like factor 5 or Leiden factor deficiency, acquired like APLA antiphospholipid antibody syndrome, lipoprotein A elevation. Any prothrombotic states, prothrombotic medications include oral contraceptives, asparaginase, chemotherapy. They cause AIS. Next is treatment of AIS. ट्रीटमेंट ऑफ एआईएस रे नंबर 1 पॉइंट मन रखा कथि तुमको एमरजेंसी थ्रोम्बोलाइसिस किंबा थ्रोम्बोएक्टोमी करा जाए नहीं ठीक नुह करवाटा। नेक्स्ट ये कुछ यंग चिल्ड्रन मान करे थ्रोम्बोलाइसिस किंबा थ्रोम्बो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी इज नॉट रिकमेंडेड। सो थ्रोम्बोलाइटिक आम यूज करबानी वी विल यूज अर्ली इनिशिएशन ऑफ एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स which will prevent reinfection. We have two options like heparin or antiplatelets like aspirin. अच्छा से कौन the hyper acute neuroprotective strategies are essential to initiate within minutes in suspected stroke because it will prevent progressive ischemic injury to the brain. कौन कौन हाइपर एक्यूट न्यूरोप्रोटेक्टिव मेजर्स अच्छी ना नहीं से कौन दिस इंक्लूड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल लाइक एवॉइड हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया, टेम्परेचर कंट्रोल एवॉइड हाइपरथर्मिया मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, maintenance of adequate cerebral perfusion to avoid hypotension hypertension and maintenance of oxygenation. अच्छा another neuroprotective strategy is urgent treatment of seizures because seizure will cause more damage नहीं तो urgent treatment of seizures is important. तो ये पेशेंट मानक यू हैव टू यूज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोएनकेफालोग्राफी कंटिन्यूअस ईजी डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अच्छी लाइक ट्रांसफ्यूजन इन सिकल सेल डिजीज, इम्यूनोसप्रेशंस इन वास्कुलाइटिस, रिवास्कुलाइजेशन सर्जरी इन मोयामोया डिसीज। सो हमारा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो गला। फर्स्ट गोल इज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्ट or immediate complications like cerebral edema. The second thing is we have to for long-term treatment goals include secondary stroke prevention including antiplatelet therapy in arteriopathy and anticoagulation in cardiogenic cases. So what is the outcome of childhood AIS? The outcome of childhood AIS, number 1, recurrent stroke in 10 to 50% of cases. 10 to 50% recurrent stroke होगा चांसेस अच्छे।
depending on the cause and preventive treatment. Death occurs in 2 to 6% of cases, and neurology deficits occur in 60 to 70% of cases, and goes to seizure disorders in less than 30% of cases. तो 10 to 50% of cases रे patient will develop a recurrent stroke, death in 6% of cases, neurology deficit 60 to 70% of cases, seizure disorder in less than 30% of cases. Next is perinatal arterial ischemic stroke. Perinatal stroke is very common. Perinatal. So perinatal stroke को मेजरली दीटा डिवाइडेशन कराई गोटे अच्छे एक्यूट प्रेजेंटेशन another one is a late presentation. Acute symptomatic neonatal AIS रे कौन हवा ना फोकल सीजर्स हवा within 24 to 48 hours of life. आउ सेठी MRI रे diffusion MRI रे you will find arterial territory infections. Whereas the late presentation, the later infancies रे कौन हुए ना अर्ली हैंड प्रेफरेंस आसी जाए किसी पेशेंट मानकर. Congenital hemiparesis, hand dominance is less than 1 year is always abnormal, नहीं. And imaging of these patients will reveal focal encephalomalacia in the arterial territory, mostly in the middle cerebral artery zone, large middle cerebral artery. Management. So the acute neonatal AIS is then seizure control is important, but M and T thrombotic agents are rarely required because the recurrence of stroke is very rare. The acute patient is the seizure control करिबो आ किसी एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट देवा दरकार नहीं बिकॉज एमनकर रेकरेंस हेबा चांसेस एते नाही. रिकरेंस केते बळ हबा जते बळ जदि न्यूनाइटेड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज अछि, कार्डियक एम्बोलिज्म अछि, प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स अछि, ए सब केसेस रे cardiac embolism, prothrombotic disorders, ऐसे केसेस रे you will definitely find AIS, recurrent AIS. like congenital arterial anomalies अछि ये सब केसेस रे. अच्छा मोस्ट पेशेंट माने करे लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाए इन पेरिनेटल ischemic stroke. MCQ होची पेरिनेटल स्ट्रोक अकाउंट्स फॉर द मोस्ट ऑफ हेमीपैरेटिक सेरिब्रल पैल्सी. तो इधर हेमीपैरेटिक सेरिब्रल पैल्सी हो जाए छुआंकर और कि छुआंकर डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग, कॉग्निशन, बिहेवियर, एपिलेप्सी ये सब आस जाए. नेक्स्ट इज चैप्टर 2 सेरिब्रल साइनोवेनस थ्रोम्बोसिस. तो सेरिब्रल ड्रेनेज को मन रखार अच्छे. सेरिब्रल ड्रेनेज रे दी प्रकार सिस्टम अच्छे सुपरफिशियल और डीप. सुपरफिशियली तुम जाऊँगी कॉर्टिकल वेन्स, सुपरफिशियल सुपेरियर सैजिटल साइनस, डीप रे तुम जीव इंटरनल सेरिब्रल वेन्स आउ सैजिटल साइनस. तो दीटी जाक कन्वर्ज करेंगे एट टर्कुला एंड एग्जिट द क्रानियल वॉल्ट वाया पेड ट्रांसवर्स साइनस आउ सिग्मोइड साइनस है बाहर जाए इंटू द जुगुलर वेन्स. तो सेरिब्रल वेनर ऑक्लूजन जब ए सब एरिया से होची ताहले कौन कौन हम ना रेज्ड डिफ्यूज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर हम, सेरिब्रल एडिमा हम. 50% केसेस रे वेनस इन्फेक्शन हम और हेमरेज हम. तो CSVT is more common in children than in adults. Risk is greatest in neonatal period. The clinical presentations of CSVT are: it is very gradual onset, variable progression, and non-specific which compared to AIS. In neonates encephalopathy haba, seizure haba. Children mane kare in children idiopathic intracranial hypertension pari haba like progressive headache वे, papilledema, diplopia, sixth cranial palsy आउ केतेबेले acute focal deficits, seizure, lethargy, confusion. अच्छा इन्वेस्टिगेशन तुम जब एनसीसीटी कर इट इज नॉट सेंसिटिव. सो इधर गो विथ कंट्रास्ट सीटी वेनोग्राफी और MR वेनोग्राफी. It will demonstrate filling defects in the cerebral venous system. अच्छा, what are the etiology? What are the risk factor for CSVT?
prothrombotic states include inherited conditions like prothrombin gene mutation or acquired conditions like antiphospholipid antibody syndrome. Prothrombotic medications like asparaginase and oral contraceptives, and some common childhood illness like otitis media, iron deficiency anemia, and dehydration. These will cause prothrombotic states. Some systemic diseases that are associated with increased risk of CSVT include leukemia, inflammatory bowel disease, or nephrotic syndrome. Next risk factor will be septic thrombophlebitis like meningitis, otitis media, mastoiditis. Next cause will be trauma. Next is neurosurgical procedures. Next is obstruction of the jugular veins. These will cause CSVT. Treatment modalities include anticoagulation. Anticoagulation therapy is unfractionated heparin or LMW heparin. Hemorrhagic venous impacts is not a contraindication for heparin therapy. Treatment is planned for 6 months. And re-imaging done at the end of 3 months. If recanalization has been confirmed, then usually heparin is discontinued. Neonates रे anticoagulation देवा ପାଇଁ बहुत रे गाइडलाइन डिफर करे. Protocol को initial anticoagulation therapy should be given shorter duration like 6 weeks to 3 months in neonates. माने 1.5 मास रु 3 मास. बड़ लोकंकर 6 मास. माने चिल्ड्रन 6 मास. Prolonged increase intracranial pressure after CSVT रो one secondary complication is compressive optic neuropathy. It can lead to permanent visual loss. तो से केस रे तमे रेगुलर फोंडोस्कोपी एग्जामिनेशन करिवो. You start a treatment that reducing intracranial pressure like acetazolamide